Hello everyone, I welcome you all to my channel Revealing Concepts. आज के क्लास में we are going to see a new concept under the topic of vector spaces only, that is the concept of linear dependence and independence of vectors. तो बेसिकली हम लोग एक सबसेट लेंगे एक वेक्टर स्पेस का और हम लोग देखेंगे कि कब वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, कब वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है, एंड उसके रिलेटेड एक कुछ प्रॉपर्टीज है. आप लोग एक बार वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज as well. So let's start. First we are going to see कि when can a set which is a subset of a given vector space is linearly dependent. तो हम लोग के पास एक vector space है VF and we take a subset S of this VF which is containing let's say some n vectors alpha 1 से लेकर alpha n तक. Now if here it is saying कि there exists at least one non-zero scalar, at least one non-zero scalar भी exist करता है such that the linear combination of those scalars and these vectors come out to be equal to zero. मतलब अगर ये true है and at the same time anyone, at least any one of these AIs turned out to be equal to zero, इसका मतलब ये जो set S है this is linearly dependent. तो अगर हमको एक भी स्केलर नॉन जीरो मिलता है with respect to the linear combination of the vectors of the subset that we have taken, then we can say that the given subset of the vector space is linearly dependent. और अगर ये linearly dependent का definition है तो linearly independent क्या होगा? That all the scalars should simultaneously be equal to zero. If all the scalars, there is not going to exist even one scalar which is equal to zero. सारे AIs would be simultaneously equal to zero. मतलब your A1 equal to A2 equal to and so on up till an अगर equal to zero है then you can say कि your set S is linearly independent. तो अगर scalars non-zero है, अगर एक there exists at least one non-zero scalar also, then the set becomes linearly dependent, and if all the scalars are equal to zero then the set becomes linearly independent. Depending upon this concept only, there are certain postulates or you could say certain conclusions that have been made. I am telling these conclusions to you because you would be using them to solve problems ahead. So सबसे पहले the first statement says that कि if two vectors are linearly dependent then one of them is a scalar multiple of others. So अगर दो linearly dependent vectors है, okay, so one can be expressed as the scalar multiple of the other. Why? Because of course here if you see there would be one non-zero scalar existing. तो let's say कि alpha 1 और alpha 2 है, this is one set that we have taken, and if we know कि this set is linearly dependent, इसका मतलब यहाँ पे जो scalars है वो non-zero है. अगर scalars non-zero है इसका मतलब your A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 would be equal to zero. But now we know कि यहाँ पे जो scalars है वो non-zero है, इसका मतलब हम किसी एक vector की value दूसरे के terms में find out कर सकते हैं because the AIs over here are non-zero. So if you have, that is why if two vectors are linearly dependent then one of them is a scalar multiple of the other. That's pretty simple to understand. Now the next statement is that a set consisting of single non-zero vector is always linearly independent. Again a very simple statement to understand. Let's say कि अगर हम लोगों ने एक zero vector वाला सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, सो इट्स अ नॉन जीरो वेक्टर, लेट्स से अल्फा 1 हम लोग को पता है कि बस यही एक सिंगलटन सेट है, दिस इज अ नॉन जीरो सेट, मीनिंग कि ये जो अल्फा 1 है ये किसी भी हालत में इट कैन नॉट टेक द वैल्यू एज जीरो. इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, रैशनल, इरैशनल, इट कैन बी एनीथिंग बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो अगर दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड वी नो कि दिस होल्ड्स ट्रू एंड दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, वी नो दिस, सो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वी कैन से कि योर A has to be equal to zero. यहाँ पे सिर्फ एक ही स्केलर है, वो स्केलर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो सेट है अगर सिंगल टन सेट है जिसमें वो जो एलिमेंट है वो अगर आपको नॉन जीरो एलिमेंट दिया है then that set becomes linearly independent always. Now similarly you have if you have a set of n vectors, this is a subset of VF and if this set is linearly independent, आपको पता है कि ये जो सेट है ये linearly independent है, इसका मतलब that none of these vectors alpha i's can be zero because already the scalars are zero only. So you can conclude कि अगर कोई set linearly independent दिया हुआ है आपको, it means that none of the scalars are zero, none of these vectors are zero, the scalars are supposed to be zero. Then next is again an interesting one.
वन अ सेट ऑफ वेक्टर्स विच कंटेन जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट. ये भी बहुत आसान है. लाइक योर इफ यू सी, इफ यू जस्ट लेट्स से कि you have alpha 1 alpha 2 और बीच में यहाँ पे कोई जीरो वेक्टर है. If you take the linear combination of these three vectors, so you would have a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 zero vector equals to 0. Now see, there are chances कि ये जो है ये जीरो हो सकते हैं, but it's not necessary कि ये जीरो होगा क्योंकि already ये एक जीरो वेक्टर है. So उस पे कोई obligation नहीं होगा that a3 has to be zero, right? Because already you have a zero vector over here, so taking a1 as 0, a2 as 0 और ये नॉन जीरो भी लेंगे तो ये आइडेंटिटी तो सेटिस्फाई हो सकती है. सो योर नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ a3 आर पॉसिबल एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि अगर किसी भी सेट में इफ देयर इज अ सेट व्हिच हैज गॉट जीरो वेक्टर इन इट, देन दैट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट. नाउ वन मोर थिंग, अ सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का छोटा सा पार्ट अगर हम लेंगे, दैट इज the subset of it, then it comes out to be linearly independent, because if all the elements of the bigger set are linearly independent, the chota sa set would of course be linearly independent. वैसे ही we have one more thing, a superset of linearly dependent set is linearly dependent, and this is very true. ऐसा क्यों है? लेट्स से कि आई हैव टेकन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये एक सेट है which is I am saying कि this is linearly dependent. What does this mean? This means कि there exists at least one scalar which is non-zero. Let's say कि अगर a1 हम लोगों ने लिया non-zero है और अभी हम इसका सुपर सेट लेते हैं, मतलब इससे बड़ा वाला including these two vectors. So we have alpha 1, alpha 2 and alpha 3. अभी इसका जब हम linear combinations लेंगे, so we already know कि the scalar corresponding to alpha 1 is non-zero, and if the scalar corresponding to alpha 1 is non-zero, इसका मतलब there is existing one scalar which is non-zero, and hence this superset of this set is linearly dependent. So this is how you are going to use the concept of linear dependence and independence further ahead in this topic of vector spaces to understand different concepts. कैसे कोई vector space linearly dependent हो सकता है, नहीं हो सकता, that we are going to see in the next video. So I request you all to stay tuned and do check my channel regularly. Thank you so much and see you soon in the next video.